Hello friend, today we are going to learn about this lesson, the last lesson by Alphonse Daudet. This lesson is about the teacher Mr. Hemil, who was a French teacher. He was going to leave the school forever and shifted to another country. Because of the Prussian soldier, he is going to take a place under their custody. So that day, French, who was the students of school, he did not like to go to the school on that day because he was afraid. He did not study properly about the task given by Mr. Hemil, and it was about the participles. So he didn't know about that. What is participle and what that. So on that day he went outside and he wanted to spend the day nearby garden or some place, but he saw the soldiers were practicing drilling demo there. So he did not like to go there. So directly he went toward the school, but he saw in a town hall there was notice board and people gathered there. Actually, every day there was a hustle bustle, but that day it was very quiet as if it was Sunday. He came near the notice board, but at that moment the washer, the blacksmith, said to the French that did not go fast. It is a plenty of time for him to go to school. So he went near his school and class. He saw the all students took their seat silently. Even the Mr. Hemil was taking round and keeping the ruler under his arm. So he was afraid what to do. But he saw the same time that all villagers came to his school and class and they were sitting backside. As soon as he went in the class and he sit another side, but at that moment, silently and very quietly, Mr. Hemil said to him to take his seat. So he was surprised. What happened? Means why teacher speak quietly and silently. He only noticed that teacher on that day wearing new dress, which he usually to wear on inspection day or in special day, like any inspection of the school or any program. So at that moment, the French was quite surprised. What is going on there? Then even the villagers sitting backside, even the houser, the old man, brought primary book of the alphabet, and they were sitting very quietly. And at that moment, the teacher, Mr. Hemil, said that it was his last lesson to study about the French. Then he came to know that it was last day, and why these villagers came there to pay the respect to this Mr. Hemil, who served this school and country for 40 years. And it was his last day, and next day he was going to another country. So he said that, dear friend and villagers, he is going to teach his last lesson. And there was no any lesson and no any teaching from next day around this area, like LSS and Lauren will not get French lesson. There was lesson of German, and next day new teacher would join. So in this way he started teaching the French, and the next moment he asked to French about to recite, but French stood silently. He didn't know what to do that. And at that moment he was regretting, and he remembered the teacher and his punishment. But that day he forgot everything, and he remembered only the goodness of the Mr. Hamill as a teacher. But teacher did not scold him. He made him to sit down, and he explained that it was a fault of parents and teacher if the French didn't know about the reciting. Then next level he taught about the grammar and writing about the French. And then at the moment, his sister who was packing everything about the that room and keeping everything in the trunk, and they were was sure that they would go next day to another country. So after that, even the French noticed that some birds, especially pigeons, they were cooking
and there was a sound of their chirping, talking. So French thought that they would teach the German also to these birds. Again, the teacher to his lesson in history, and by that time, 12 o'clock, there was a big sound of the bell at church, and it was time of the prayer. And after that, the teacher saw the soldiers were returning from the drilling and from the practicing. Then at same time, he was going to say something, but he didn't say, as if it was chalk in his throat. So he took chalk and written. The French was good language and would be forever. Then he convinced all the people that do not forget French language. It might be going to prison. At the same time, everybody was sad and looking at him and saluting to him. On the other hand, the houser, the old man, right? He was crying, literally crying. And it was the last day of the teacher and for the people to learn, to study the French language, right? So the Mr. Hemil didn't say anything. He leaned toward the wall and he hinted, gave hint to all that they might go. So my dear friend, this lesson is about the Mr. Hemil who is going to another country, right? And there was a Prussian soldier who were coming there and control the area. And even the next day, the German was be taught no French language. So मेरे प्यारे दोस्तों, द लास्ट लेसन इसको लिखा गया अल्फांसो ड्यूडेट ने. इस लेसन में जो कैरेक्टर है मिस्टर हेमिल, फ्रेंच टीचर, वो उस देश छोड़कर दूसरे देश में जाने वाले थे और उनका वो लास्ट लेसन था. तो उस दिन क्या होता, द फ्रेंच जो स्टूडेंट है वो लेट उठता है और स्कूल जाने का उसका मन नहीं करता है क्योंकि उसे कुछ काम दिया गया होता है मिस्टर हेमिल द्वारा. और वो काम था पार्टिसिपल्स, और उसे पता नहीं पार्टिसिपल्स क्या है. तो बाहर निकलता है घर के बाहर और कहीं ना कहीं अपना समय प्रसार करने के लिए गार्डन या आसपास में जाने की कोशिश करता है. लेकिन वो देखता है कि वहां पर प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे. तो वो इरादा छोड़ देता है और स्कूल की तरफ जाने लगता है. उसी समय वो देखता है कि टाउन हॉल के पास बहुत गर्दी है. एक्चुअली टाउन हॉल ऐसा एरिया है जहां पर हसल बसल रहती, मतलब बहुत भीड़ भाड़ होती है, आवाजें होती है. तो वो देखता है कि शांत एरिया है वो. उस दिन ऐसा लगता है कि जैसे संडे है या कुछ हो गया हो. वो पास में जाता है और उसी समय वॉशर द ब्लैक स्मिथ उसे कहता है कि इतनी जल्दी मत भागो, बहुत समय है स्कूल में जाने के लिए, राइट. और अपने स्कूल के पास जाता है और अपने क्लास के पास पहुंचता है और खिड़की से देखता है कि बहुत सारे सब टीचर सब स्टूडेंट्स आ गए और शांति से बैठे. और उसी समय मिस्टर हेमिल राउंड ले रहे, राइट, अपने लकड़ी बगल में लेते हुए. वो देखते ही कुछ कुछ नजारा अलग ही है और अंदर जाता है और उसी समय गलती से दूसरी जगह बैठ जाता है. लेकिन टीचर शांति से उसे कहते हैं कि अपनी जगह जाके बैठो. और बाद में देखता है कि वहां पर सब गांव वाले पीछे बैक बेंच पर बैठते हैं और वो बहुत निराश, नाखुश दिखाई देते हैं और दुखी दिखाई देते हैं. उससे सवाल होता है कि भाई आज क्या है. और उसी समय टीचर ने कपड़े पहने हुए थे, जो कपड़े एक्चुअली वो पहनते हैं इंस्पेक्शन हो या कोई त्योहार हो उसी समय, राइट, कोट और ब्लैक कैप. तो उसे समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है. लेकिन जैसे टीचर कहते कि आज उनका लास्ट लेसन है और नेक्स्ट डे वो छोड़ के चले जाएंगे, मतलब उस दिन वो खाली फ्रेंच का लास्ट लेसन है. और उसे पता चलता है कि ये गांव वाले क्यों आए हैं, क्योंकि मिस्टर हेमिल ने 40 साल उस स्कूल पे पढ़ाया था और एज अ रिस्पेक्ट के तौर पर, आदर भावना लिए ये गांव वाले उसको मिलने आए थे या उसको सुनने आए थे. और उसी समय मिस्टर हाउसर जो बूढ़ा इंसान है वो भी प्राइमरी किताब लेके आया था अल्फाबेट्स की, राइट. और ऐसे माहौल में उसे पता चल गया कि नेक्स्ट डे टीचर छोड़ के जाएंगी और वहां पर एलेक्सिस और लॉरेंट इस एरिया में कभी फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी.
और नेक्स्ट दिन से नए टीचर आएंगे और वो जर्मनी पढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से मिस्टर हेमिल पूछते हैं फ्रेंच को कि रिसाइट करो, स्वर दिखाओ या बोलो, लेकिन फ्रेंच को पता होता नहीं कि रिसाइट क्या है, वो चुपचाप खड़ा रहता है। लेकिन टीचर उस दिन उसे डांटते नहीं है और वो कहते हैं कि ये गलती टीचर की और पेरेंट्स की है। तो उसे सरप्राइज होता है फ्रेंच को, वो बैठ जाता है। उसके बाद फिर बाद में टीचर ग्रामर और राइटिंग के बारे में पढ़ाते हैं और पढ़ाते पढ़ाते वहां पर राउंड लेते होते हैं और उसी समय कुछ कबूतर वहां पर आवाज निकालते हैं, राइट। तो राइटर मतलब में फ्रेंच सोचता है कि इन कबूतरों को भी पढ़ाया जाएगा जर्मन लैंग्वेज, इनको भी कुछ शिक्षा दी जाएगी। और उसी समय मिस्टर हेमिल की सिस्टर बहन वो पैकिंग करती होती है क्योंकि उन्हें नेक्स्ट दिन छोड़ना है, चले जाना है। बाद में टीचर मिस्टर हेमिल हिस्ट्री पढ़ाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते वो देखते कि कुछ सोल्जर, फ्रांसियन सोल्जर वापस आ रहे हैं सर अपना ड्रिलिंग कर कर या प्रैक्टिस करके। तो उसी समय वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते या उनके गले में कुछ अटक जाता है। फिर वो कुछ चॉक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फ्रेंच एक अमर लैंग्वेज है, एक अच्छी लैंग्वेज है, उसे भूलना नहीं चाहिए। फिर बाद में वो कहते हैं कि फ्रेंच को भूलना नहीं है, याद रखना है हमेशा, शायद जेल में जाना पड़े तो भी चलेगा। और इसी तरीके से वो इशारा करते हैं सबको कि वो जा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, दिस लेसन इज अबाउट टू रिस्पेक्ट टू मिस्टर हेमिल एज अ टीचर। इट वाज हिज लास्ट लेसन to the people and to the students, and that is why it was emotional scene for everyone, even the French who always scared of Mr. Hemil. But that day he remembered each and everything, and he was regretting that why he didn't learn French language as it is his mother tongue. तो दोस्तों इस तरीके से हम देखते हैं कि मिस्टर हेमिल टीचर छोड़ के जा रहे हैं नेक्स्ट दिन, और उसी समय फ्रेंच जो उसे पश्चाताप होता है और वो खुद को सवाल करता है कि क्यों नहीं मैं फ्रेंच सीख पाया जो उसकी मातृभाषा थी। दोस्तों इस लेसन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।